देखो राजा, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਫਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ? केस 6 देखिए, मशीनरी इज गिवन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब इन बैलेंस शीट, एंड द accumulated depreciation balance is also given in the balance sheet। accumulated depreciation ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ? फर्स्ट वे इज एसेट्स जो माइनस कर दोगे, लाइक दिस एग्जांपल। सेकंड वे इज they'll show on the liability side। थर्ड वे इज they'll give the opening closing in the adjustment। ठीक है। जब सानू इस तरह प्रेजेंट किया, सानू पता the value before accumulated depreciation is the gross value, and below that is the net value, and we have to make the fixed asset account at gross value। yes or no? So fixed asset account means machinery account gross values te ban जाओगे कि ना 70,000 and 1 lakh, and accumulated depreciation the opposite balance आओगे minus हो रहे, so that will be buy balance brought down and to balance carried away। how much? 20,000 and 30,000। अगर सानू second way given ਹੁੰਦਾ, second way that is questions की हो सकता, asset side machinery only 70,000 and 1 lakh, and liability side accumulated depreciation or provision for depreciation। Then also in the asset side the gross values are given, that's okay। third चीज क्या आंदी? If the value of accumulated depreciation is given in adjustments, उत्थे की सीखा जी? We need to add back to make them gross। ठीक है, वो वाला केस आऊगा, so we'll discuss। फिलहाल easy case है, machinery is having a debit balance, so to balance brought down and buy balance carried down। accumulated depreciation was the opposite, that is buy balance brought down and to balance carried down। nothing else is given। this is the बिल्कुल basic case of this type। किया होगा accumulated depreciation के अंदर by P&L hyphen depreciation provided, and fixed assets के अंदर to cash hyphen purchases। yes or no? पूरे ध्यान है। टेल मी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज आर गिवन, minus accumulated depreciation also opening closing is given। we know that always make fixed assets account at a gross value। yes or no? so पहली चीज की करोगे, दसो क्विक। सृष्टि पहली चीज बच्चा, मशीनरी अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 lakh, और accumulated depreciation के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 20,000 एंड टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। चार चीजें आ जाओगी पहला, यस और नो? सुनो किकली भी आओगी इतने, सो बी वेयर एवरीवन विल मार्क जो हो गया। फर्स्ट थिंग, this is done, this is done, this is done, this is done। yes or no? after that question says machinery costing rupees 20,000, accumulated depreciation 5,000, sold for 25,000। so costing ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? working note, costing 20,000, accumulated depreciation 5,000, remaining balance is 15,000, and you sold the 15,000 wala asset for 25, you got a profit of 10,000। this is our working note। yes or no? out of this की put कर दे किथे किथे? first of all you put the sales, buy cash hyphen sale in the machinery account, to P&L hyphen profit 10,000 in the machinery account। yes or no? this and this। yes or no? उस तो बाद सर कॉस्ट कितने नहीं पाते, WDV कितने नहीं आता, AD, this AD is depreciation for the machine which is sold। so key line सीखी हुई, depreciation is cancelled at the time of sale of asset by passing a cross entry that is quickly with the accumulated depreciation that is दोस्त account। yes or no? so ਇੱਥੇ की पानी ਅਸੀਂ quickly मतलब जब तक दोस्त नहीं सी कल तक ਅਸੀਂ ਆ वाला depreciation पाई किते, पाई सी किते नहीं। ठीक है, दिस बेसिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ द लेसन्स। बी वेल, तो की करोगे बोलो? accumulated depreciation पुट करोगे 5,000 केड़े एसेट दी which is sold। so machinery account will write by accumulated depreciation, and accumulated depreciation will write to machine 5,000 and 5,000। yes or no?
Any other adjustment given? No. So balancing figure will be depreciation provided in this and there two cash hyphen purchases. Clear? Yes or no? Next case. Case 8. Machinery costing rupees 20,000. WDV 16,000 sold for 11,000. This is just a practice for that. 7 or 8. So if you want to practice, you can write both. If you know the case, you can write one of them. So पहली चीज की करोगे to balance brought down 1 lakh and buy balance carried down 1 lakh 30,000 in the machinery account. So this is done and this is done. Yes or no? After that, in the accumulated depreciation account, buy balance brought down 30,000 and to balance carried down 45,000. It's 30 and 45. After that, we'll read the adjustment. Machinery costing 20,000. WDV is given. Matlab AD is not given. Listen very carefully. Costing 20,000. WDV 16,000 means the accumulated depreciation is 4,000. Sold for 11,000. Okay. 16,000 वाली चीज sold for 11 मतलब loss of 5,000. Yes or no? Now, sale will be shown like buy cash hyphen sale in the machinery account. Buy P&L hyphen loss 5,000 and the depreciation of that asset will be cancelled by passing a profit. This one 4,000 and the balancing figures depreciation provided in the lower account and the upper one to cash hyphen purchases. Clear? Yes or no? Last check इसे क्या होया बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स एंड द accumulated depreciation कितना कितना शो कर दे फर्स्ट केस इज they'll deduct accumulated depreciation out of the fixed assets value. Second option was this side fixed assets and this side accumulated depreciation. Third case was show the fixed assets and accumulated depreciation opening closing values will be given in the adjustment. Yes or no? But उत्थे सीखन वाली चीज याद रखने वाली केड़ी चीज सी बोलो this was gross we will use this and we will not use the net value अगर इस side पाई this was also gross so no issue but in the third case ਇੱਥੇ ਕੀ show ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ net value so we need to add back yes or no so बोलो case 9 opening value 1,70,000 closing value 2 lakh and accumulated depreciation opening value 30,000 closing 50,000 machinery account is to be prepared at gross values so you need to add this back to balance brought down 2 lakh and buy balance carried down 2 lakh 50,000 yes or no 2 lakh and 250 and the AD account on 30,000 and 50,000 then basic case was there so depreciation provided at the purchase simple yes or no this was the mostly and one more adjustment is there relating to the interest on loan or debentures for cash flow what's that listen very carefully ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ debentures or loan we'll discuss relating to debentures this is your opening this is your closing debentures the opening value is given let us suppose rupees 1 lakh closing value is given rupees 50,000 let's take 60,000 okay and debenture interest was 10% okay we need to calculate the interest on bolo debentures provided as well as paid how will we calculate let's take first case which case 1 says ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ issue ਹੋਇਆ ਜਾਂ redemption first case ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ the redemption was done on the closing date
Redemption was done on the closing date. So tell me कितना इंटरेस्ट लगूगा पूरा साल कितने डिबेंचर्स रहे 1 लाख क्लोजिंग वाले दिन रिडेम्पशन हो गई so means पूरा साल कितना रहा 1 लाख so interest will be calculated on 1 lakh itself 1 lakh into 10% that is 10,000 yes or no second case question says the redemption was done on the starting date on the starting date opening date then what will be the value of interest देखो पहले दिन ही 1 लाख the debentures जो 40,000 redeem हो गए कितने बचे 60 so whole year the debentures were for 60,000 and 10% interest means 6,000 interest on debentures provided as well as paid ठीक है third case or any case like question can say specific date in the mid of the year let it be January December and 30 June give us 6 months so then case 3 says redemption is done on the 30 June then what will you do starting कितने डिबेंचर से 1 lakh interest rate is 10% this 1 lakh debentures remain till 6 months after that 40,000 redemption is done remaining is 60,000 interest rate 10% for how many months 6 yes or no so it's 5,000 plus 3,000 total interest on debentures provided as well as paid comes out to rupees 8,000 तो वैसे 3 months का भी कोई केस किया जा सकता अगर इस प्लेस से कह दोगे 31st March so 3 months will be on 1 lakh and 9 months will be on 60,000 अगर इस जगह कह दोगे तो 9 months will be on 1 lakh and 3 months will be on 60,000 ये सब मेन थिंग हम लास्ट की बची सोचा डेट्स अकॉर्डिंग हो जाऊंगा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो you can assume anything either opening or closing but there you have to mention बात नहीं करना नंबर नहीं मिले जो यूज करोगे कि ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे मेंशन करके आओगे इट इज अज्यूम्ड दैट द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड ऑन द 1st January और ऑन द 31st December ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਓਕੇ ਯੈਸ অর नो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸਿਊਮਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲਾ then also you will focus as per the given values और ਉੱਥੇ कुछ सिखर वाला नहीं values as it is use करोगे months as it is use करोगे that's all yes or no ठीक है चलो इतना 5 मिनट लगाओ देखो राजा बेसिक ये 5 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने तो बाद ठीक है ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर टैक्स ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ सोच के देखो इज इट ऑपरेटिंग इन नेचर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स एक्चुअली टैक्स रोज का काम बिजनेस का रेगुलर हर ईयर का चीज है रेगुलर बेसिक बिजनेस रिलेटेड थिंग है सो इट्स ऑपरेटिंग इन नेचर सो जेड़ा इतने बाय पी एंड एल आ रहा है कितने जाओगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐड हो जाओ बाय पी एंड एल दी रीजन की सी यू रिमेंबर कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ठीक है बट ਤੁਹਾਡੇ बीकॉम सिलेबस डायरेक्ट मेथड भी है करना भी है इस टाइम बट इनडायरेक्ट मेथड वर्क्स विद द पीएनएल ठीक है स्टार्ट करते चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस तो ठीक है आफ्टर दैट सानू जेडी भी नॉन ऑपरेटिंग चीज है ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ
then only you will get the operating answer. फंड फ्लो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਫੰਡਸ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਸ ਫਰਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਨॉन ऑपरेटिंग है बाहर कर दो, जो भी नॉन कैश है लाइक डेप्रिसिएशन बाहर कर दो, जो सिर्फ किसी पर्पसली सिर्फ फंड ट्रांसफर किया लाइक ट्रांसफर टू रिजर्व रिवर्स करो, उन्ना पैसा गया थोड़ी कितने, नॉट ऑपरेटिंग इन नेचर, अगेन वो सारी चीजें की करोगे रिवर्स। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस जो पैसा ट्रांसफर है रिजर्व वापस लेके आओ, ऐड करके देखोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पैसा बाहर गया पीएनएल चो, वापस लेके आओ, क्योंकि क्यों, बिकॉज दैट्स द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी द लॉस, ऑपरेटिंग ओ ऑपरेटिंग रेगुलर रीजन का नहीं है, रिवर्स करोगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट रिवर्स करोगे, की कितना होया प्रॉफिट ऐड कितना होया, हुन की करोगे माइनस करोगे, लॉस की कितना सी माइनस हुन की करोगे प्लस करोगे। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल दसो गुडविल रिटर्न ऑफ, इट इज नॉन कैश, वैल्यू ऑफ गुडविल हैज गॉन डाउन डिडक्टेड, ओके, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਟ ਪੀਐਨਐਲ ਚ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ प्लस करो। गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट ऑल द इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ की करोगे एड बैक करोगे। ठीक है, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ, so point is जिथे भी by P&L आया that will be added in the operating activities, so will by P&L tax provided will be added to the operating activities, and to cash tax paid is also operating nature, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੀਐਨਐਲ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਐਨਐਲ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਆਊਟਫਲੋ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ माइनस। ठीक है, yes or no, provided will be added in the operating activities and tax paid will be deducted from the operating activities itself। ठीक है, दो चीजें क्लियर। सेकेंड एडजस्टमेंट वाज proposed dividend provided की करोगे, अगेन प्रोवाइडेड मींस पीएनएल पाया बट इट रिलेट्स टू डिविडेंड का आधा पॉइंट है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ऑपरेटिंग से रिवर्स करोगे, ओके ऐड बैक करोगे। डिविडेंड पेड relates to financing activities, उत्थे माइनस करो, provided operating च add, dividend paid financing च minus, whether it's proposed dividend or interim dividend for both। next फिर ਅਸੀਂ कितने investments, purchase of investment की कितनी outflow in the investing activities minus करोगे, sale of investment inflow add करोगे investing activities, but ਇੱਥੇ भी profit loss हो सकता, तो किसी क्या इफ देयर इज प्रॉफिट यू रोट टू पीएनएल हाइफन प्रॉफिट, टू पीएनएल वाली चीज ऑपरेटिंग्स की करोगे एडेड है माइनस कर दो, बाय पीएनएल किसी लॉस माइनस कितना है प्लस कर, ओके बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यस और नो, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी परचेज सेल दा कांसेप्ट सेम, लॉस प्रॉफिट दा सेम, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड बाय पीएनएल ऐड बैक कर, यस और नो, depreciation provided also add back in the operating activities। ठीक है, yes or no, तो अपनी सारी एडजस्टमेंट्स ना तुसी हुना नोट कर सकते कि इन्वेस्टिंग की होना ऑपरेटिंग की होना। ठीक है, और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग माइनस होगा,